में जाकर के खूब खेलती हैं। They go and play happily on the lap. तो गोद को कहा जाता है कुख। Lap is called cook. हिंदी में गोद को कहते हैं कोख। कुख वंशावली वाला। In Hindi, lap is called cook, that is womb. Cook Vanshavali, that is the lap-born progeny. तो जिन्होंने कोख को ज्यादा देखा, गोद का ज्यादा सुख लिया, देह का सुख लिया, वो हुआ कुख वंशावली में। Those who saw the lap more, those who experienced happiness more on the lap, those who enjoyed the happiness of the body became the lap-born progeny, that is Cook Vanshavali. और जिन्होंने ज्ञान मुख से सुना, And those who listened to the knowledge from the mouth और मुख से सुना हुआ ज्ञान अपने बुद्धि में धारण किया, and imbibed that knowledge in the intellect और दूसरों को सुनाया, and narrated it to the others, वो हो गए मुख वंशावली। became the mouth-born progeny, that is Mukh Vanshavali. तो जो मुख वंशावली ब्राह्मण होते हैं वो हैं थोड़े, So, the Brahmins who are the mouth-born progeny are very few, और जो कुख वंशावली होते हैं वो होते हैं ढेर। and the lap-born progeny are many. वो देह का सुख लेते हैं, They take the happiness of the body. तो शास्त्रों में उनकी देह बड़ी बड़ी दिखाई गई। So, in the scriptures, their body is shown huge. जैसे रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के बड़े बड़े रूप बनाए जाते हैं। Like the very big forms of Ravan, Meghnad, Kumbhakaran are made. क्योंकि उन्होंने देह का सुख लिया। Because they took the pleasure of the body. और राम लक्ष्मण को छोटा छोटा दिखाया। And Ram and Lakshman are shown small. ऐसे ही कंस और कृष्ण का युद्ध दिखाते हैं तो कंस बहुत लंबा चौड़ा। In the same way, when they show the war between Kans and Krishna, Kans is shown to be very huge. और कृष्ण बलराम को छोटा छोटा दिखाते हैं। And Krishna and Balram are shown small. तो इसका मतलब ये हुआ So it means कि जिनमें ज्यादा देह भान होता है that those who are more body conscious वो है रावण संप्रदाय जैसे ब्राह्मण, are as if the Brahmins of the Ravan's community. और जिनमें ज्ञान ज्यादा होता है तो ज्ञान की वजह से वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। And those who have more knowledge stay in the soul conscious stage due to having more knowledge देह भान न होने के कारण and due to not having body consciousness. वो आत्माएं ज्ञान सुनने और सुनाने में ज्यादा मस्त रहती है। Those souls are engrossed more in listening and narrating the knowledge. तो जब मिक्स हो गए, When they got mixed up, और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उसमें है, विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी हैं। the best Brahmins are among them, like Vishwamitra, Vashishta, और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे दुष्ट ब्राह्मण भी हैं। and there are also wicked Brahmins like Ravan, Kumbhakaran and Meghnad. उन दुष्टों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। The number of the wicked Brahmins increases a lot. तो परमात्मा को फिर युक्ति रचनी पड़ती है। Then the Supreme Soul has to find a way. जो सतयुग के आदि में नारायण या कृष्ण वाली आत्मा थी, वही जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में दादा लेखराज ब्रह्मा जो बनती है, उस ब्रह्मा का चोला छोड़ देते हैं, शरीर छूट जाता है। The one who was the soul of Narayan or Krishna in the beginning of the golden age and while taking many births becomes Dada Lek Raj Brahma in the end of the Iron Age. He, that is the Supreme Soul, leaves the body of that Brahma. That body is left. है तो वो कृष्ण का जो चोला था वो प्यार भरा चोला था। So that body of Krishna was a body full of love. देखने सुनने में भी अच्छा था, He was good even to look at, to listen to. और मुख से बोल में भी अच्छा था। And he was good at speaking as well. तो जो उनके मधुर बोल थे
उनको शास्त्रों में मुरली बांसुरी दिखा दी है। So his sweet words were symbolized with the flute in the scriptures. మురళి అని చెప్పబడిందంట. बांसुरी की तान मीठी होती है ना, The tune of the flute is sweet, isn't it? तो शास्त्रकारों ने कृष्ण को दिखा दी है मुरली बांसुरी। శాస్త్రకారు So the compilers of the scriptures have shown Krishna to possess a flute. కృష్ణుడు రాజాని మురళి అని చెప్పారు. Someone said, the tune of a flute is very nice to hear. हाँ, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, మంచిగా వినిపిస్తారు. लेकिन क्या होता है, Yes, it is very nice to hear. But what happens is that लेकिन होता क्या है कि जो दुष्ट प्रकृति के ब्राह्मण होते हैं वो उस मीठी तान का उल्टा अर्थ उठाते हैं। అయితే what happens is that the Brahmins possessing a wicked nature take the opposite meaning of that sweet tune. అర్థం చేసుకున్నారంట. जैसे कोई परिवार में माँ होती है, ఎలా For example, there is the mother in a family. చూడండి, माँ बहुत प्यार से बच्चों को संभालती ఆ है, తల్లి The mother looks after the children with a lot of love. కదా, लेकिन दुष्ट बच्चे उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। But the wicked children take undue advantage of that. పిల్లల ప్రేమే. ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हुआ। Similarly, it happened in the Brahma Kumari ashram. వాళ్ళని అలసిగా తీసుకున్నారు. जो दुष्ट ब्राह्मण थे ఎవరైతే దుష్ట బ్రాహ్మణులు ఉన్నారో उन दुष्ट ब्राह्मणों ने दुष्टता कर करके ब्रह्मा का दिल इतना ज्यादा दुखाया। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, The wicked Brahmins who were there showed so much wickedness and caused grief to Brahma to the extent that Brahma means the senior mother. इतना दिल दुखाया ఎంత They hurt his heart so much कि उनको हार्ट अटैक हो गया। that he had a heart attack. హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంట ఆయనకి. ये बात शास्त्रों में भी दिखाई, This event is shown in the scriptures as well. शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण के पाँव में बहेलिये ने तीर मारा దీన్నే और वो मर गए। It is shown in the scriptures that a hunter shot an arrow at Krishna's foot and he died. వేస్తే మరణించాడు అని దీన్ని ఆ విధంగా శాస్త్రాల్లో చూపించారు. तो ये पाँव की बात नहीं है, It is not about these feet. जैसे पाँव से कहीं चल के जाया जाता है, For example, we walk with our feet and go somewhere. तो ऐसे ही पाँव का मिसाल देते हैं In the same way, the example of the feet is given. कि तुम्हारी बुद्ध रूपी पाँव गुरु जी तक नहीं पहुँच पाएंगे, Your intellect-like feet will not be able to reach the Guru. हाँ, చెప్పండి నిమిషం. तो ఎవరైతే పరమాత్మ ఏదైతే ఉందో బట్వాదనంటే నీ యొక్క हाँ, तो इस पाँव में कोई तीर लगने से उनकी मौत नहीं हो सकती। So, his death cannot take place if an arrow is shot at his physical feet. वो नम्र चित्र की जो आत्मा थी, That soul, with a gentle heart, उस कोई कमजोर नम्र चित्त होता है some are weak and gentle-hearted, और कोई कठोर दिल होता है। तो जिसका కొంతమంది అంటే ఆ తండ్రి and some have a strong heart. చాలా మృదువైంది కదా, దానివల్ల ఈయన తట్టుకోలేకపోయారు అనమాట. పరమాత్మ చెప్పారు. कठोर दिल वाला आदमी होता है అదే उसको కఠినంగా कोई बातों का असर नहीं होता। So, the person who has a strong heart is not affected by anything. అంటే తట్టుకోగలరు అనమాట. और जो कमजोर दिल का आदमी होता है And a person who has a weak heart उसको बात का असर ज्यादा हो जाता है, is more affected by the issues. तो उनका हार्ट फेल हुआ వాళ్ళకైతే హార్ట్ అటాక్ రాదు. और शरीर छोड़ दिया। So, his heart failed and he left the body. तो परमात्मा जो उनमें प्रवेश करके मीठी मीठी भाषा सुना रहा था, मीठी मीठी वाणी सुना रहा था, मुरली सुना रहा था, वो काम बंद हो गया। So, the task of narrating the sweet language, the sweet Vani, the Murli, which the Supreme Soul was performing by entering him, came to an end. आसुरी ब्राह्मण बढ़ चढ़ के इतने ज्यादा बढ़े कि उन्होंने सारी संस्था को अपनी मुट्ठी में ले लिया। The devilish Brahmins grew in number to such an extent that they took the entire institution in their grip. हाँ, वो वहाँ काबिज हो गए।
they took possession of that place. अपनी कुर्सी पे बैठ गए They sat on their chairs, దానికి తీసుకున్నారంట. తీసుకొని और जो కూర్చున్నారు. श्रेष्ठ కూర్చున్నారు. और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण थे అయితే ఎవరైతే and those who were the Brahmins who made elevated efforts. हाँ, जो जिनमें से कोई तो मम्मा को फॉलो करते थे, Among them, some followed Mamma. सरस्वती जगदम्बा सरस्वती को जो కొంతమంది ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी थी, సరస్వతి Jagdamba Saraswati, who was the cooperative Shakti of Brahma Baba, వాళ్ళు और कोई ऐसे थे जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते थे। and some were the ones who followed Brahma Baba. ब्रह्मा बाबा को ज्यादा पसंद करते थे, కొంతమంది They liked Brahma Baba more. तो वो मम्मा और बाबा को पसंद करने वाले ब्राह्मण जो है అంటే అమ్మా लेके నాన్న से टूट गए। So those Brahmins who liked Mamma and Baba broke away from the yajna, क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ा వచ్చే तो वो चले गए। వదిలేసి వెళ్ళిపోయారంట. because when Mamma left her body, they went away. और 2-3 साल के बाद ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो जो उनको पसंद करने वाले थे वो भी चले गए। And after 2-3 years, when Brahma Baba left his body, then those who liked him also went away. ముందు अब रह गए उसमें सिर्फ देहधारी गुरुओं को मानने वाले। Now, only those who gave importance to the bodily gurus remained. అయితే तो అప్పుడు उन्होंने सारे यज्ञ अपने हाथ में कर लिया। కొందరు వెళ్ళిపోయారు బాబాని ఇష్టపడేది మమ్మ ఉన్నంతసేపు మమ్మల్ని తయారు చేసే వాళ్ళు They took the entire yajna in their hands. ఉన్నారు. ఇంకా అప్పుడు ఇవి ఎప్పుడైతే సేవలు अब తీసుకున్నారో उसमें एक ग्रुप और रह गया। There was one more group among them. वो ग्रुप वो जो कि यज्ञ के आदि में ही That group was of the souls which were in the beginning of the yajna itself. ఒక గ్రూపు शुरुआत में మొదట్లో जब सन 36-37 में ब्रह्मा के द्वारा 36-37 काम शुरू हुआ था। బ్రహ్మ ద్వారా हाँ, మొదలైనప్పుడు 36 में At the very beginning, when the task was started through Brahma in 1936-37, 36 वो आत्मा ऐसी थी जिन्होंने यज्ञ का पूरा फाउंडेशन डाला, सारा सार संभाल की। those souls were the ones who laid the complete foundation of the yajna, maintained everything. लेकिन जब देखा कि इस यज्ञ के अंदर वो आसुरी ब्राह्मण घुस रहे हैं तो उन्होंने अपोजिशन किया। उन अपोजिशन మాదిలో కూడా ఈ But when they saw that the demonic Brahmins were entering the yajna, they opposed it. యజ్ఞవాదులు ఎప్పుడైనా 36 ఏళ్ళు ఎవరైతే वो इतना अपोजिशन उस समय हो गया था So much opposition had taken place at that time कि 2 ग्रुप अलग अलग हो गए। that the two groups became separate. एक आसुरी ब्राह्मणों को फॉलो करने वाला ग्रुप, One group was the one that followed the devilish Brahmins, వాళ్ళు और एक वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो यज्ञ के शुरुआत में ही छोड़ करके चले गए। and the other was of the best Brahmins who left the yajna in the beginning itself. तो वो आत्माएं फिर दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में आई। ఎవరైతే యజ్ఞం Those souls take rebirth and come into the yajna again. तो तीसरा ग्रुप फिर तैयार हो गया। Therefore, the third group got ready again. वो श्रेष्ठ ग्रुप जो यज्ञ के आदि में था, That best group which was there at the beginning of the yajna. वो आत्माएं वो है ఆ ఆత్మలో ఇప్పుడు जिन्होंने यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा जब तक रही तब तक उसका साथ दिया। They are the souls who supported the Ram's soul until he was there in the beginning of the yajna. और जब शुरुआत में वो राम की आत्मा छोड़ के चली गई अपोजिशन करके तो पीछे पीछे वो भी चली गई। And when Ram's soul opposed and went away in the beginning, they too went behind him. వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. ఆయనతో పాటు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు అనమాట. वही आत्माएं फिर दोबारा यज्ञ में जन्म लेकर के मम्मा के शरीर छोड़ने से लेकर के और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक दोबारा यज्ञ में आने लगी, अपना दूसरा जन्म लेकर। हाँ, दूसरा जन्म लेकर। The same souls took birth in the yajna again, and after the demise of Mamma, up until the demise of Brahma Baba, they started coming into the yajna again by taking the second Brahmin birth. इसलिए गीता में लिखा है That is why it is written in the Gita कि ये ज्ञान जो है इसका कभी विनाश नहीं होता। that this knowledge is never destroyed. పురాణంలో చెప్పారంట. ये भले शरीर छूट जाए
although the body is left. तो भी दूसरा जन्म लेकर के जब वो आत्मा आएगी तो उसके अंदर वो ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। If that soul comes having taken another birth, the knowledge will emerge in the soul. మళ్ళీ యజ్ఞంలో వచ్చి జన్మ తీసుకుంటారని మురళి పాయింట్ ఉందంట. तो वो द्वारा आत्माएं आती हैं। So those souls come again. आते ही उनमें सबसे पहले राम वाली जो आत्मा आती है वो आकर के अपना संगठन वहाँ तैयार करना शुरू करती है। ఎవరైతే రామవాలి As soon as they come, the soul of Ram, who comes first, starts to make his gathering there. తయారవుతే సంఘాల యొక్క సంఘటన और తయారు परमात्मा शिव जो है, And the Supreme Soul Shiv, పరమాత్మ जिसने ब्रह्मा का शरीर छोड़ दिया था, ఎప్పుడైతే who had left Brahma's body, ఇప్పుడు और राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करना। ఆయన enters in the personality of Ram. మళ్ళీ యజ్ఞంలో ఉన్న ఆది ఆత్మలో ప్రవేశించడం జరిగింది రామవాలి ఆత్మ. अंतिम जन्म में कृष्ण वाली सोल तो ब्रह्मा का रूप धारण करती है। In the last birth, the soul of Krishna takes the form of Brahma. वो माँ का पार्ट हुआ। That became the part of the mother. जैसे माँ प्यार से बच्चों को पालती है, Just as a mother sustains her children with love. लेकिन जो बच्चे प्यार में बिगड़ जाते हैं माँ के प्यार से, But the children who become spoiled with the love of the mother, ఎవరైతే పాడైపోతారో ఆ బ్రహ్మలు बिगड़ जाते हैं, उन बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए to reform those spoiled children, फिर परमात्मा को राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करके कड़क रूप धारण करना पड़ता है शंकर का। the Supreme Soul has to then enter the personality of Ram to take on the strict form of Shankar. ఈ యొక్క పాత్రలో तो ज्ञान के पॉइंट्स वही रहते हैं जो ब्रह्मा के मुख से बोले थे। The points of knowledge remain the same, which were narrated through Brahma's mouth. तो అవే ब्रह्मा ఉంటాయి ఏవైతే బ్రహ్మ ముఖం నుంచి ఏవైతే పాయింట్లు వచ్చాయో అయ్యే పాయింట్లు ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి ब्रह्मा के मुख से जो पॉइंट्स बोले थे वो पॉइंट ब्रह्मा के मुख से मीठे मीठे बांसुरी की ताल लग रही थी। The points which were narrated through the mouth of Brahma appeared to be very sweet, like the tune of a flute from Brahma's mouth. वही पॉइंट फिर शंकर के द्वारा उनका नया अर्थ निकलता है। And a new meaning comes out of the same points through Shankar. జ్ఞానం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పాయింట్స్ ని మళ్ళీ పరమాత్మ శివుడు జరిగిందనమాట. तो वो मुरली की जो मीठी तान थी वो बदल करके राम के बाण बन जाते हैं। So, the sweet tune of the flute changed into the arrows of Ram. తండ్రి చెప్పే జ్ఞానంలో जैसे कहते हैं ना ये क्या बोलता है, जैसे बाण मारता है। For example, it is said, he speaks as if he shoots an arrow, isn't it? కూడా బాణ వేసిన तो कृष्ण के मंदिर में तो बांसुरी दिखाते हैं मीठी तान वाली, In the temples of Krishna, they show the flute, which produces the sweet tune. और शंकर और शिव के मंदिर में नगाड़ा दिखाते हैं, गड़क 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 गड़क। And in the temple of Shankar and Shiv, they show the drum, that is Nagada. हाँ, तो वो प्रलय कोई स्थूल प्रलय की बात पहले नहीं होती। ప్రళయం So, the annihilation is not about the physical annihilation first. ఆ పాత్ర చేయలేదు అంత భయంకరమైన ये పాత్ర. जो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हुई, ఎందుకంటే इस ब्राह्मणों की दुनिया में जो आसुरी ब्राह्मण है, The world of Brahmins that was prepared, the demonic Brahmins in it, आसुरी ब्राह्मणों को नष्ट करने के लिए, उनकी नाक नीची करने के लिए to destroy those demonic Brahmins, to bring their status down. परमात्मा जो है वो राम वाली आत्मा शंकर के द्वारा ऐसे ऐसे ज्ञान के बाण छोड़ता है जिससे डाउन हो जाते हैं। The Supreme Soul shoots such arrows of knowledge through Shankar, through the soul of Ram, by which they feel low. माने उनका निश्चय उखड़ जाता है, It means that they lose faith. आलस्य बुद्धि हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं। They become those with a faithless intellect and are destroyed. शरीर से खत्म होने की बात नहीं है, It is not about the physical destruction. బుద్ధి సే हाँ, बुद्धि से उनका मनोबल डाउन हो जाता వాళ్ళ యొక్క మనోభావం డౌన్ అయిపో Someone said, through the intellect. Yes, through the intellect,
their power of the mind goes down. और जो देवताई ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं, श्रेष्ठ। And those who are divine Brahmins, who are going to become deities from Brahmins, श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हैं, who behave righteously, who make good effort, उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता है। వాళ్ళ యొక్క their zeal and enthusiasm increases. మనసు ఉమంగ ఉత్సాహంతో బయటకు వస్తారంట तो వీళ్ళైతే उनका उमंग उत्साह इतना ज्यादा बढ़ता है Their zeal and enthusiasm increases so much कि वो इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं कि थोड़े ही टाइम में वो नर से नारायण जैसे देवता बन जाते हैं। that they do such elevated effort that within a short span of time they become deities like Narayan from a man. చేస్తారు और देवताओं की दुनिया स्थापन हो जाती है और असुरों की कलयुगी दुनिया खलास हो। And the world of deities is established and the Iron Age world of devils is destroyed. तो सारी सृष्टि पर उन ब्राह्मणों का राज्य हो जाता है। Then there is the rule of those Brahmins on the entire world. देवताओं का राज्य हो जाता దేవతల యొక్క It becomes the kingdom of the deities. है। इसलिए हमारे यहाँ जो झंडारोहण करते हैं, That is why in our country, when we hoist the flag, हाँ, तो उसमें 3 रंग दिखाते हैं। 3 colors are shown in it. नीचे हरा रंग ब्रह्मा का, The green color at the bottom is of Brahma, जो स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग का हरियाली देखता रहता है। ఆయన స్వర్గ who keeps seeing the greenery of heaven. కళ్ళ స్వర్గం యొక్క ఆత్మతిని చూస్తారు ఆయన. ఆయన పచ్చటి స్వర్గాన్ని చూస్తూ ఉండేవారంట బ్రహ్మ और ऊपर लाल रंग, And the red color at the top. ఆయనేమో लाल रंग माने विनाश का జెండా सूचक, పైన అంటే వినాశం खूनी क्रांति। The red color indicates destruction, bloody revolution. పూనే క్రాంతి खूनी क्रांति 2 तरह की, The bloody revolution is of 2 types. రెండు एक होती है मन के अंदर संकल्पों का खून बहता है, One is the blood of thoughts that flows inside the mind. संकल्प आपस में टकराते हैं, The thoughts collide with each other. కొట్టుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందట संकल्पों का खून। It is the blood of thoughts. రక్తం నడుస్తుంది అన్నమాట और ये संकल्पों की खूनी क्रांति जब ब्राह्मणों की दुनिया में पूरी हो जाती है, And when this bloody revolution of thoughts is finished in the world of Brahmins, तब फिर बाहर की दुनिया में स्थूल खून की ఈ नदियां గ్రామంలో बहती हैं। ఎప్పుడైతే then in the outside world, the physical rivers of blood flow और दुनिया का विनाश हो जाता है। and the world is destroyed. ఇక్కడ కొట్టుకుంటే బయట ప్రపంచంలో కూడా కొట్టుకుంటారు तो नीचे का हरा रंग ब्रह्मा का, So the green color at the bottom is of Brahma. గుర్తు ऊपर का लाल रंग शंकर का, పైన రెడ్ The red color at the top is of Shankar. గాడి యొక్క और రూపాన్ని बीच में सफेद रंग विष्णु का, మధ్యనేమో सतयुग की ఏలుకొచ్చి And the white color in the middle is of Vishnu, the symbol of the golden age. तो ये 3 कपड़े दिखाए जाते हैं झंडे में। So these 3 cloths are shown on the flag. 3 రంగులు कपड़ा माना చూపించారు ये शरीर रूपी वस्त्र, కప్పడం అంటే Cloth means the body-like dress. అన్నమాట దాని యొక్క గుర్తుగానే జెండా తయారయ్యింది जैसे गीता में कहा है ना, Just as it has been said in the Gita, అలా అయితే कि ये शरीर जो है वस्त्र है, this body is a dress. వస్త్రంతో आत्मा పోల్చారు గీతలో इस पुराने वस्त्र को त्याग देती है ఆత్మ और नया वस्त्र धारण कर लेती है। వస్త్రాన్ని తీసుకున్నట్టుగా చెప్తారు కదా है? గీతలో. The soul leaves this old dress and takes on a new dress, hasn't it? तो ऐसे అదే విధంగా ही ये 3 वस्त्र हैं। Similarly, there are 3 cloths. इन 3 वस्त्रों के द्वारा, 3 शरीर रूपी वस्त्रों के द्वारा ఈ ముగ్గురు Through these 3 cloths, through the 3 body-like dresses, सारे विश्व के अंदर विजय శరీర प्राप्त రూపీ होती है। వస్త్ర victory is achieved over the entire world. ఈ ये ముగ్గురు ब्रह्मा, వారిని ये ఈ विष्णु, విశ్వం యొక్క ये బాధ్యత. शंकर, ये 3 पात्र जो हैं, విశ్వంలో Brahma, Vishnu and Shankar, these 3 actors, ये 3 देवताएं जो हैं वो मिलकर के सारे विश्व के ऊपर भारतवर्ष के अंदर ఈ ముగ్గురు अपना కలిసి परचम फैला देते हैं। these 3 deities join together and spread their influence in the entire world in the region of Bharat. అవుతారంట बाकी हाँ, భారతదేశం बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखला ఏదో दे। స్థూలం As for the rest, it isn't the fact that
the flag made of cloth will achieve victory over the world and show. ये शरीर रूपी 3 वस्त्र ఈ हैं। శరీర రూపీ These are the 3 cloth-like bodies. इन 3 वस्त्रों के द्वारा Through these 3 cloths, परमात्मा शिव పరమాత్మ తండ్రి अभी सारे विश्व के ऊपर మొత్తం ప్రపంచం మీద हम भारतवासियों को विश्व विजय करा देंगे। the Supreme Soul Shiv will now make the people of Bharat become victorious over the entire world. तो ये 3 कपड़ों को पहचानना है। So we have to recognize these 3 cloths. వాళ్ళని తెలుసుకోవాలి 3 शरीर रूपी जो वस्त्र है, టీం శరీర రూపీ వస్త్రం चैतन्य वस्त्र, చైతన్యంలో ఉన్నారు వాళ్ళు उनको पहचानना है। The 3 cloth-like bodies, the living cloths, we have to recognize them. और वो ही पहचान देने के लिए ये सारा ज्ञान है। And this entire knowledge is for giving that identity. अभी जो युद्ध चल रहा है वो ब्राह्मण की दुनिया के अंदर, Now, the war which is going on inside the world of Brahmins, जो राक्षस संप्रदाय है, जो ब्राह्मण संप्रदाय है, उनके बीच का युद्ध चल रहा है। the war is between the demonic community and the Brahmin community. ब्राह्मणों की दुनिया में जब ये युद्ध पूरा होगा When this war is completed in the world of Brahmins, तो स्थापना हो जाएगी नई दुनिया, छोटा रूप। అనేది the establishment of the new world will take place in a small form. ब्राह्मण देवताओं का छोटा रूप तैयार हो जाएगा। The small form of the Brahmin deities will become ready. फिर बाहर की दुनिया में आग लगी। Then the outside world will catch fire. 100 साल के अंदर सभी धर्म पिताओं ने आकर के अपना अपना धर्म स्थापन किया है। All the religious fathers have come and established their respective religions within a time of 100 years. इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, सब ने ज्यादा से ज्यादा 100 साल लिए। 100। Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, all of them have taken at the most 100 years. इसी तरह परमात्मा भी सन 36 में आया और 2036 में जाकर के ये सारा काम। In the same way, the Supreme Soul came in 1936, and in 2036, all the work will be accomplished. 100 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది उसमें 2 मूर्तियों का काम पूरा हो गया। Out of that, the task of the 2 personalities has been completed. टाइम पूरा हो गया। టైం కూడా Their time is over. ब्रह्मा के 33 वर्ष, బ్రహ్మకి 33 इयर्स, The 33 years of Brahma 30 సంవత్సరాలు और शंकर के 33 इयर्स, ये पूरे होने जा रहे हैं 1-2 साल के अंदर। and the 33 years of Shankar are now going to be completed within a year or 2. अब ब्राह्मणों की दुनिया में असुरों का सफाया होने जा रहा है। And the devils are going to be cleaned off from the world of Brahmins. हाँ जी, वो सफाया होगा। Yes, the cleaning will take place. और दूसरी तरफ एक छोटा सा संगठन जो है वो तैयार हो जाएगा। And on the other side, a small gathering will become ready. हाँ जी। इसमें संगठन तैयार होता है। और उस छोटे से संगठन की पालना विष्णु के द्वारा शुरू हो जाएगी। And the sustenance of that small gathering will start through Vishnu. विष्णु कोई अलग से 4 हाथ पांव वाला होता नहीं है व्यक्ति। Vishnu is not some separate personality with 4 arms and legs. हाँ, अलग से नहीं होता है कोई। He is not separate. विष्णु और नाम क्या है? ये ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति सरस्वती, Saraswati, the cooperative Shakti of Brahma, जिन्होंने 66 में शरीर छोड़ा था। who left the body in 1966. 60 में अवधि शरीर। వాళ్ళే శరీరం వదిలిపెట్టేశారు ఆవిడ. और शंकर की सहयोगिनी शक्ति पार्वती, And Parvati, the cooperative Shakti of Shankar, శంకరుడి యొక్క సహయోగి माने राम की सहयोगिनी शक्ति सीता। meaning Sita, the cooperative Shakti of Ram. ये दोनों ही मिलकर के Both of them join together, जो रूप बनता है वो बनता है वैष्णव देवी। and the form which comes forth is Vaishnavi Devi. हाँ, ఎవరంటే ఓంకార మీకు కనిపించాలన్న డ్రెస్ చేసుకుంటే మన మమ్మీ हाँ। ओम राधे ने शरीर छोड़ा, वो सूक्ष्म शरीरधारी बन गई। Yes,
Om Radhe left the body and she became a subtle body being. वो प्रवेश करती है। ఆవిడ ఇక్కడ ప్రవేశిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ప్రవేశిస్తారు. ఢిల్లీలో. तो जो ఓం రాధ. రండి వారు She enters. Someone said in Mama. Yes. तो जो संपन्न रूप बनता है वो वैष्णवी देवी कही जाती है। So the complete form which is formed is called Vaishnavi Devi. సంపన్న రూపాన్ని వైష్ణవి దేవి అంటారు. हाँ जी, और उस वैष्णवी देवी के पीछे शक्ति देने वाला जो रूप है And behind Vaishno Devi, the form which gives her power वो है ब्रह्मा की सोल प्लस ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है। is Brahma's soul plus Brahma is shown in the form of the crescent moon. ఎందుకంటే బ్రహ్మ అసంపూర్ణత సంపన్నం అవ్వలేదు శరీరం వదిలిపెట్టే నాటికి. तो राम के अंतिम जन्म में ब्रह्मा की सोल भी चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है। రాముడి So, in the last birth of Ram, the soul of Brahma enters in the form of the moon, ప్రవేశించున్నారు. और शिव की सोल तीसरे नेत्र के रूप में శంకర प्रवेश करती है। రూపంలో and Shiv's soul enters in the form of the third eye. इसलिए एक ही शरीर में అంటే ఒకే శరీరంలో 3 आत्माएं काम करती మూడు ఆత్మలు కలిగి That is why 3 souls work in just one body. हैं। राम वाली आत्मा शरीरधारी, Ram's soul is the one who bears the body. రామాలి ఆత్మ एक दूसरी चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा, The second one is the moon, the soul of Brahma. और तीसरी शिव वाली आत्मा, And the third one is the soul of Shiv. तो उसको कहते हैं त्रिनेत्री शिव। He is called Trinetri Shiv, that is the three-eyed. माने 3 आत्मा रूपी नेत्र है। It means there are 3 souls in the form of eyes. हाँ, రామాలి ఆత్మ శివుడు బ్రహ్మ शंकर शं माना शिव, Shankar. Shan means Shiv. का माना कृष्ण, Ka means Krishna. रा माने राम, And Ra means Ram. शिव कृष्ण राम, ये तीनों जिस शरीर में मिक्स हो जाते हैं उसको कहते हैं शंकर। Shiv, Krishna and Ram. The body in which all the 3 are combined is called as Shankar. शंकर माना मिक्स, Shankar means mix. శంకర్ అంటే మిక్స్డ్ పాస్. जैसे कहते हैं वर्ण शंकर। శంకర్ అంటారు. Like they say, Varna Shankar, that is hybrid. ये जो शंकर का रूप है वो तीनों कपड़ों में सबसे ऊपर का रूप दिखाया जाता है। The form of Shankar is shown as the highest among the 3 cloths. జరిగింది. देव देव महादेव। మహాదేవ్ శంభో శంకర. Dev, Dev, Mahadev. Someone said, Dev, Dev, Mahadev. हाँ, क्यों कहा जाता है उनको महादेव? Yes. Why is he called Mahadev? ब्रह्मा ने जो काम किया वो वही काम किया जो सब धर्म पिताओं ने किया। The task which Brahma did was the same task which all the religious fathers did. हाँ, ब्रह्मा ने जो धर्म स्थापना का काम किया वो ब्राह्मण धर्म स्थापन किया। Yes, the task of the establishment of the religion which Brahma did was that he established the Brahmin religion. लेकिन असुरों का विनाश नहीं किया। But he did not destroy the devils. బ్రహ్మ ద్వారాగా तो जब असुरों का विनाश नहीं हुआ वो ज्यादा तादाद में जो कि तो बने रहे तो ब्राह्मणों को कोई पूछता नहीं। So when the destruction of the devils did not take place and they remained in large numbers like before, nobody pays attention to the Brahmins. శాశ్వత బ్రాహ్మణులు అసలు బ్రాహ్మణులు మిక్స్ అయిపోయారు. శరీరం ప్రత్యక్షత జరగలేదు. मिक्स हो जाते हैं। మిక్స్ అయిపోయారు. They are both mixed up. तो इसलिए అందువలన जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने सबने अपना अपना धर्म स्थापन कर दिया। That is why whichever religious fathers came, everyone established their own respective religions. लेकिन पुराने जो पना चला आ रहा था, पुराने धर्म जो चले आ रहे उनका विनाश नहीं किया। But they did not destroy the oldness, the old religions which were continuing. पुराने धर्मों का विनाश नहीं किया, उनका अपोजिशन नहीं किया। They did not destroy the old religions,
they did not oppose them. तो पुराना भी चलता रहा और उसमें नया भी मिक्स कर दिया। So the old continued and they mixed the new into it as well. जैसे दूध का भरा वो गड़ा विष का भरा हुआ घड़ा हो, For example, if there is a pot filled with poison, विष भरा हुआ है उसमें, if there is poison filled in it, या आधा घड़ा है जो विष से भरा हुआ है, or there is a pot which is half filled with poison, और हाँ, కుండలని సగం వరకు మిషన్ और उसमें कोई आधा घड़ा दूध का और डाल दे, and if someone pours half a pot of milk into it, तो क्या हो जाएगा? what will happen to it then? అలా చేయాలి. पूरा विष हो जाएगा। The whole of it will become poisonous. ऐसे ही In a similar way, धर्म पिताओं ने आकर के क्या किया, अपना अपना ज्ञान सुना दिया। what did the religious fathers do when they came? They narrated their own knowledge. उन्होंने सुधारने की कोशिश तो की, They certainly tried to reform the world. लेकिन थोड़े समय के बाद फिर दुनिया नीचे गिरने लगती है, नई दुनिया नहीं। But after some time, the world starts to go down again. नई दुनिया नहीं बनती। The new world is not made. तो जितने भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने आकर के इस दुनिया की मरम्मत तो की, Whichever religious fathers came, they certainly did the repairing work of this world when they came. रिपेयरिंग तो की, They repaired it, దాన్ని కొత్తగా తయారు చేయలేకపోయారు, हाँ, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। కానీ పరివర్తన అవ్వలేదు, but there was no transformation. చేయలేకపోయారు। परिवर्तन तब होता है जबकि पुरानेपन का विनाश किया जाए The transformation takes place when the oldness is destroyed और नए धर्म की स्थापना की जाए। పురాతనమైన and the new religion is established. ప్రపంచ స్థాపన ఒకటి। तो पुराने धर्मों का अगर विनाश करते वो धर्म पिता है, If those religious fathers had destroyed the old religions, तो उनको अपोजिशन सहन करना पड़ता है। then they would have had to face the opposition. పోవాల్సి వస్తుంది కదా। इतनी उनमें ताकत नहीं थी, They did not have so much power. लेकिन ये तो परमात्मा का कार्य है। परमात्मा तो शक्तिशाली है। But this is the task of the Supreme Soul. The Supreme Soul is powerful. శక్తిశాలి। जो ज्यादा शक्ति का काम है वो फिर महादेव शंकर के द्वारा करें। The task in which more power is needed is done through Mahadev, Shankar, అందరికంటే శక్తిశాలి, ముకాబలా करने का ఎందుకంటే the work of confronting. ఆ ఎదుర్కొనే శక్తి ఒక శంకరుకే ఉన్నారనమాట। तो शंकर को महादेव कहा जाता है। Shankar is called Mahadev. అన్నారు हाँ, कोई पूछे If somebody asks, कि शंकर को महादेव क्यों कहते हैं? 33 करोड़ देवताओं को देव कहते हैं, देवता। why Shankar is called Mahadev? The 330 million deities are called Dev, that is deities. శంకరుని ఒక్కరినే మహాదేవుడు అంటారు అని ఎందుకంటారో అడగండి, దాని సంగతి। विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को देवता कहते విష్ణు हैं, దేవత, Vishnu is called deity, Brahma is called deity. शंकर को महादेव क्यों कहते हैं? Why is Shankar called Mahadev? A great deity? वो इसलिए कहते हैं जो काम किसी ने नहीं किया ఎందుకంటే ఆ కార్యం ఎవరు वो काम वो చేయలేరు। कर देता है। ఆ కార్యం They see it because he does the task which nobody did. सारी आसुरी दुनिया में जो आसुरी धर्म फैले हुए हैं, उन आसुरी धर्मों को अपोजिशन करके और उनका संहार कराया देता है। He opposes all the devilish religions which are spread in the entire world and enables to destroy them. ఉన్నారనమాట। ఆశ్రీ శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటినీ కలాస్ చేసి ఒక దేవీ సంస్థ ఏదైతే ఉందో అదే స్థాపన చేస్తారు, ఒకే ధర్మం అది దేవీ ధర్మం. వినాశనం చేసి इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव किस लिए आते हैं? That is why it is said, why does God Shiv come? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। गीता में लिखा है ना? Dharma sansthapanarthaya vinashaya cha dushkritam. It is written like this in the Gita, isn't it? कि सत्धर्म की स्थापना करने आता हूँ और दुष्ट धर्मों का विनाश करने के लिए। I come to establish the truthful religion and destroy the wicked religions. तो अपने अपने धर्म की स्थापना तो सब कर लेते हैं, So everyone establishes their own respective religions.
लेकिन जो पुराने पुराने धर्म फैले हुए हैं जो बहुत तामसी है, But the old religions which are spread, which are very degraded, बहुत दुष्ट धर्म है, उनका विनाश किसी ने नहीं किया, which are very wicked religions, nobody destroyed them. तो वो विनाश का कार्य शंकर के द्वारा संभव। So, the work of destruction is accomplished through Shankar. इस तरह से ये कार्य चल रहा है। So, in this way, the work is going on. पहले कार्य छोटे रूप में होता है। First, the work is done in a small form. ये दुनिया जो है एक तरह से षष्ठ रूपी मकान है। This world is like a house. वो षष्ठ रूपी मकान जैसे बनता है। That world-like house is formed when, कोई मकान बनाया जाता है just as when a house is built, तो पहले बुद्धि में, इंजीनियर की बुद्धि में प्लान तैयार होता है। first the plan becomes ready in the intellect of the engineer. नक्शा तैयार होता है, वो छोटा रूप हुआ। A sketch or a map is prepared. That became a small form. फिर वो प्लान जो है वो प्रैक्टिकल में आता है जमीन में। Then that plan comes out in practical on the ground. मकान की नींव भरी जाती है, बिल्डिंग तैयार होती है। The foundation of the house is laid. The building is prepared. तो पहले सूक्ष्म रूप आता है, फिर स्थूल रूप आता है। So, first comes the subtle form. Then comes the physical form. ऐसे ही नई दुनिया की प्लानिंग लेकर के परमात्मा अभी इस सृष्टि पर आ गया। Similarly, the Supreme Soul has now come to this world, having brought with him the planning of the new world. हम ब्राह्मणों की बुद्धि में नई दुनिया की प्लानिंग आ चुकी। The planning of the new world has come into the intellect of us Brahmin children. ब्राह्मणों की दुनिया में ఈ బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో नई दुनिया की स्थापन हो रही है। ప్లానింగ్ అంతా చేతుల్లో తీసుకుంటారు అనమాట బుద్ధి నుంచి। ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया भी स्थापन हो रही है। The new world is also being established in the world of Brahmins. తయారు చేస్తారు। और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए जो हर हर बम बम वो ज्ञान के एटम बम भी तैयार हो गए। And to destroy the old world, Har Har Bum Bum, the atom bombs of knowledge have also become ready. ज्ञान की जो एटम बम तैयार हो रहे हैं జ్ఞానంలో ఆటం బాంబులు తయారవుతాయి। उनसे आसुरी दुनिया का सारा विनाश, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो जाएगा। उसके बाद फिर The destruction of the devilish world within the Brahmin world will take place from the atom bombs of knowledge which are becoming ready. बाद में फिर स्थूल का తర్వాత After that, the physical task will take place. వినాశం అవ్వాలి। बाद में जो कार्य होगा वो बड़ी दुनिया के लिए होगा, स्थूल दुनिया के लिए। The task which will take place later will be for the big world, for the physical world. उसमें जो बड़े बड़े एटम बम फटेंगे उससे బయట दुनिया का ప్రపంచంలో खलास వినాశం होगा। అవడం గురించి బోర్డు బాంబులు తయారై ఉన్నాయి, అవి ఎలాగ అవుతాయి? Very big atom bombs will explode then. So, that world will be finished. ब्राह्मणों की छोटी दुनिया की स्थापना हो रही है। The small world of Brahmins is being established. हाँ, तो एक స్థాపన तरफ ఉందో पुरानी दुनिया में जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है बहुत फैली हुई है ईरान से तुरान तक। Yes, on one side, in the old world of Brahmins, which is widely spread right from Iran up unto Turan. हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक महानगर में, हर एक विदेश में విదేశాల్లో ये ब्रह्मा कुमारी ఈ आश्रम फैले हुए हैं। బ్రహ్మకుమారి In every city, in every village, in every major city, in every foreign country, the Brahma Kumari ashram, that is centers, are spread. इन सबका खलासा ఇవన్నీ All of them will be destroyed. అంటే सारे ही खलास हो जाएंगे, तब नए तरीके से फिर से स्थापना शुरू होगी। When all of them are destroyed, the establishment will take place again in a new way. और सबसे మొదలవుతుంది, స్థాపన అనేది మొదలవుతుంది। फिर सारी दुनिया में सभी सेंटरों में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व। ప్రతి సెంటర్ Then, in all the centers in the entire world, you will have to write
Adhyatmik Ishwarya Vishwavidyalay. ఈ సెంటర్కి ఒకే పేరు. స్థాపన ఒక్క పేరే, ఒకే తండ్రి. अभी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। Now it is written Prajapita Brahma Kumari Ishwarya Vishwavidyalay. इसलिए यहाँ ब्रह्मा का नाम रोशन हो रहा है चारों तरफ। అంటే Therefore, the name of Brahma is becoming famous everywhere. ब्रह्मा कुमारियों का नाम रोशन हो रहा है। The name of Brahma Kumaris is also becoming famous. लेकिन जब शंकर का कार्य संपन्न हो जाएगा కానీ But when the task of Shankar is accomplished, तब ब्रह्मा का कार्य खत्म। the work of Brahma will be over. ब्रह्मा का नाम निशान खत्म हो जाएगा। The trace of Brahma will vanish. इसलिए दुनिया में भी That is why even in the outside world, ब्रह्मा की मंदिर नहीं बनाए जाते, temples are not made for Brahma. ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, Brahma is not worshipped. ब्रह्मा की मूर्तियाँ नहीं बनाई। Idols of Brahma are not made. जब त्रिदेव कहे जाते हैं, त्रिदेव कहे जाते हैं, When they are called Tridev, that is the three deities, तो ब्रह्मा का काम क्यों नहीं दिखाया जाता? why isn't the work of Brahma shown? బ్రహ్మ యొక్క కార్యం చూపించడం జరగలేదు. ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते? Why are temples not made for Brahma? जब त्रिदेव कहे जाते हैं तो ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते? మూర్తిలో When they are called Tridev, why are temples of Brahma not made? ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते? ब्रह्मा की मूर्तियाँ क्यों नहीं बनाई जाती? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं పూజ होती? కూడా జరగలేదు. Why aren't the temples of Brahma made? Why aren't the idols of Brahma made? Why is Brahma not worshipped? Why is he not worshipped? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य शुरू हुआ वो अधूरा रह गया। Because the task which was started by Brahma remained incomplete. इसलिए जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की पूजा नहीं होती, అందువల్ల That is why, just as Abraham, Buddha, Christ are not worshipped, उनके मंदिर नहीं बनते, their temples are not made. उनकी मूर्तियाँ बनती हैं तो मंदिर में नहीं रखी जाती, Even if their statues are made, they are not kept in the temples. పెట్టలేదు. मंदिर में रख के पूजा नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्मा की पूजा होती है। They are not kept in temples and worshipped. Similarly, that of Brahma are not made. क्यों? Why? क्योंकि ब्रह्मा ने माँ के रूप में पार्ट बजाया। It is because Brahma played the part in the form of a mother. जो माँ के रूप में पार्ट चलता है वो कोमल पार्ट है। The part which is played in the form of the mother is a gentle part. जिस घर में बाप नहीं होता तो बच्चे माँ के ऊपर कंट्रोल करने लगते हैं। The children start controlling the mother in the home, where the father is not there. घर बिगड़ जाता है। The home is spoiled. घर बिगड़ जाता क्या है। क्या क्या बोला? घर बिगड़ जाता है। जिस घर में बाप नहीं रहता, A house in which the father is not there माँ का ही कंट्रोल रहता है, तो माँ के प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। and only the mother controls, the children become spoiled with the mother's love. ఎవరైతే ఉన్న పిల్లలు ఎలా అయితే పాడైపోతారో है बाप कंट्रोलर होता है। The father is the controller. అని తండ్రి అయితే చేయలేరు. ऐसे ही ये हालत हुई है ब्राह्मण परिवार की। Similarly, this has become the condition of the Brahmin family. इसलिए इन ब्राह्मणों आसुरी ब्राह्मणों ने ही ब्रह्मा का नाम डुबो दिया। That is why these devilish Brahmins have themselves ruined the name of Brahma. है नाम डुबो दिया, और वो जो ब्रह्मा संसार में ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता उसका नाम निशान खत्म कर दिया। And that Brahma who would have been worshipped in the world, they finished his name and race. इसलिए दो देवताओं की पूजा होती है, विष्णु అందువల్లనే की రెండు దేవతలకే జరిగింది. और విష్ణుకి शंकर। శంకరుడికి. That is why two deities are worshipped, Vishnu and Shankar. ब्रह्मा की न पूजा होती, न मंदिर बनते, न मूर्तियाँ बनती। Brahma is not worshipped, neither his temples are made, nor are his idols made. जैसे और धर्म पिताओं का है। Just like the other religious fathers. ఇది కూడా పూజ అనేది మనకు లేదు, జరగలేదు. अब ये जो कार्य चल रहा है, Now, the work which is going on, ज्ञानी तू आत्माओं के समझने की चीज है।
is something to be understood by the knowledgeable souls. इसलिए गीता में कहा है ज्ञानी प्रभु में विशेष प्यारा। Therefore, it is said in the Gita, Jnani Prabhuve Vishesh Pyara. ज्ञानी आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। The knowledgeable souls are especially dear to me. बाकी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की तरह जो खाते रहते हैं, पेट भरते रहते हैं, सोते रहते हैं, ऐसे ही जिंदगी गंवाए रहते हैं, वो तो जीव जंतु है। The rest who keep eating, keep filling their stomach, keep sleeping, simply waste their lives like worms, spiders, animals and birds. They are living creatures. वो श्रेष्ठ प्राणी नहीं है जिन्हें कहा जाता है मनुष्य। Those animals are not so elevated like the ones who are called human beings. जो मन का उपयोग करे మనసుని ఉపయోగించుకోవాలి, वो मनुष्य। వాళ్ళే మనుషులు। The one who uses his mind is a human being. जो मन बुद्धि का उपयोग न करे, Those who do not use their mind and intellect, जैसे जानवर हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, are like animals that eat, drink, live and sleep. ऐसे ही अगर जिंदगी सारी बिताई दी మొత్తం జీవితం If they spend their whole life in the similar way, గడిపేస్తూ ఉంటాం। तो मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क रहा? then what is the difference between human beings and animals? अभी क्या करना है? What should we do now? हैं? यहाँ तो देखो तुम्हारे गांव में छोटी छोटी कन्याओं ने आकर के सारा ज्ञान पकड़ लिया। చూడండి మీ ఊర్లో చిన్న కన్య Just look here. In your village, small girls have taken the knowledge. है? शास्त्रों में भी ये बात दिखाई है శాస్త్రాల్లో ఈ మాట These issues are mentioned even in the scriptures. कि छोटी छोटी कन्याओं ने बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े गुरुओं को बाण मारे। That small girls shot arrows to big gurus like the big Bhishma Pitama. है तो बाण कोई लोहे के बाण नहीं मारे, బాణం అంటే ఏదో కర్రతో చేసిన బాణం కాదు। Yes, they did not shoot the arrows of iron. They shot the arrows of knowledge. ये तो गाँव बहुत भाग्यशाली है। This village is very fortunate. है? इवन गाँव वालों को खूब सहयोग देना चाहिए। The people of the village should give full cooperation. है? అందరికీ సహయోగం तो हमने रजिस्टर देखा तो इसमें कोई नहीं है, बस दो लोग आते చూసాను, हैं। ఎవరో క్లాస్ But we saw in the register that nobody comes to class. Just 2 people come. ఎవరు లేదు, क्लास में తయారవ్వలేదు दो ही ఇక్కడ। लोग आ रहे हैं। Only 2 people are coming to class daily. రావాలి, మీరందరూ వచ్చి సహయోగాన్ని ఇవ్వాలి, బాబాకి ఇస్తున్నారు. ఊరండి ఊరు అంత వరాన్ని ఇస్తున్నారు బాబా। మీరు ఇస్తున్నారంటే మీకు సహయోగం మీరు ఇస్తున్నట్టు కాదు, మీరు తీసుకుంటున్నట్లు బాబా అంటున్నారు. భగవంతుడికి రావాలి స్వయంగా భగవంతుడు అంటే అంతా ఇంకా బాబా ఏమంటే బాబా యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో 2 కళ్ళు, ఒక కన్ను సూర్యుడు, ఒక కన్ను చంద్రుడు, మధ్యలో శివుడు నిరాకారం ఉంటారు. ఆ 3 రూపాయలు శంకరుడు అంటారు. वेदांत कौन? Someone asked who Vedanti is. जो राजघराना बनता है ना, రాజ राजघराना పరివారం రాజ పరివాर। రాజ The royal family which is made. పరివారం उस राज परिवार में भी 2 माताएं होती हैं। రాజు Even in that royal family, there are 2 mothers. ఉంటారు। एक होती है राजमाता One is the Rajmata, that is the Queen Mother, और दूसरी होती है राजलक्ष्मी। and the other is Raj Lakshmi, that is the Queen. राजमाता कौन? राजलक्ष्मी जो होती है वो महाराजा के साथ कुर्सी पर बैठती है। రాజలక్ష్మి అయితే Raj Lakshmi sits beside the Maharaja, that is the king, on the throne. వాళ్ళు राजमाता जो होती है वो अलग एक कुर्सी ऊंची వేరే जगह पर डाली जाती है ఉన్నతమైన और वहाँ वो बैठती है। Rajmata sits separately on a chair placed at a higher position. उसका मान मर्तबा बहुत होता है। Her reputation is very high. ये परंपरा हमारे घरों घरों में भी चली आ रही ఆ है। యొక్క పద్ధతి This tradition is also continuing in each and every house in India. పరంపరంగా జరుగుతుంది కదా తల్లి। जिसे सास कहते हैं ना, For example, there is someone who is called the mother-in-law, isn't there? ఎలా అయితే అత్తగారు ఉంటారు కదా, वो सास को बहुत मान्यता दी जाती है। అత్తగారికి చాలా The mother-in-law is given much importance. విలువిస్తారు కదా। అంటే लेकिन घर गृहस्थ का संचालन जो है वो बहुरानी करती है, है ना? మొత్తం But
the daughter-in-law runs the household. इसलिए ब्राह्मण గౌరవం అయితే ఆవిడకే तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो माता ఈ है। బ్రాహ్మణ Therefore, there are two mothers in the world of Brahmins as well. हाँ, एक तो जगत माता। ఒకరైతే One is Jagat Mata, that is the world mother. क्या? What? जगत माता Jagat Mata. है, జగదంబ है, दूसरा है। और दूसरी है भारत माता। And the other one is Bharat Mata, that is the Mother India. क्या? What? भारत माता कौन? Someone asked, who is Bharat Mata? भारत माता वो शक्ति है जिसे हम कहते हैं राजलक्ष्मी। राजा Bharat Mata is that part whom we call Raj Lakshmi. लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कहो, You may call her the soul who is going to become Lakshmi. राधा बनने वाली आत्मा कहो, రాధా అంటే पार्वती कहो, పార్వతి అనుకోండి The soul who is going to become Radha, Parvati, है। और अव्वल नंबर सीता कहो। or you may call her the number one Sita. जब राम और रावण का विनाश करने के लिए चले हैं ना, When Ram went to destroy Ravan, రావణాసురుడు వినాశనం చేయడం కోసం వెళ్ళారు కదా उन्होंने सीता की एक सोने की मूर्ति बनाई he made a golden image of Sita ఇప్పుడు బంగారు చేతులు పెట్టుకొని और वो చేస్తారు కదా पंचवटी में रख दी। and kept it in Panchavati. और सीता जो असली सीता थी उससे कहा, And he told to the real Sita, तुम पावक में करो निवासा, అసలు చేత అయితే అక్కడ तुम अग्नि में निवास कर जाओ, माने योग अग्नि में बैठ जाओ। యోగాగ్నిలో Tum Pavak me karo nivasa. Go and live in the fire, meaning sit in the fire of yoga. हाँ, जब लगे करो निशाचर नासा, Jab lage karo nishachar nasha. जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम योग अग्नि में बैठो। Until I destroy the devils, that is nishachar. You sit in the fire of yoga. నేను అసలు చంపను అప్పటి వరకు నువ్వు యోగాగ్నిలోనే ఉండు। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से ये यज्ञ में भी यही काम चल रहा है। So, in this way, the same work is going on in the yajna as well. और जो राजलक्ष्मी बनने वाली है మాతాజీ రాజలక్ష్మి మీ చేతిలో కన్నా योग ఇందులో की स्टेज में వస్తున్నాయి। अपने अपना कार्य कर रही है। And the one who is going to become Raj Lakshmi is doing her work in a stage immersed in remembrance. వాళ్ళ और उसकी जो सोने की मूर्ति बनाई गई है అయితే బంగారు वो है जगदम्बा। ఆవిడ జగదంబ ఆవిడ జగదంబ బంగారు చేతులు. सारे जगत की अम्बा। మొత్తం And her golden image, which is made, is Jagdamba, the mother of the entire world. वो जगदम्बा का ही दूसरा रूप ఆ జగదంబ सब धर्मों में माना जाता है। प्रकृति, कुदरत, ప్రకృతి కుదరత్ ప్రకృతి कुदरत, नेचर। The other form of Jagdamba, which is recognized in all religions, is nature. हाँ, మిగిలిన అన్ని ధర్మాల్లో వాళ్ళు అంటారు మిగతా అన్ని ధర్మాల్లో జగత్తునే ప్రకృతి రూపంలోనే। ప్రకృతి రూపంలోనే అంటారు అక్కడ మిగతా అన్ని ధర్మాల్లోని सब धर्मों का जन्म होता है उससे। Jagadamba, all the religions are born through her. लेकिन आसुरी धर्म जो है కానీ అసలు జన్మ उसको ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं। But the devilish religions do not give much importance to her. जन्म तो देती है జన్మ लेकिन मान्यता नहीं देती। కానీ She gives birth to them, but they do not give importance to her. हाँ, तो जो मान्यता नहीं देते हैं इसलिए वो उन सबका विनाश कराई देती है। Therefore, she destroys all those who do not accept her. ఎప్పుడైతే ఆ మాన్యత అసలు సంహారిణి बनती అందరినీ है। వినాశనం చేసి She becomes the destroyer of the devils, that is, Asur Sangharni. ఆహార రూపంలో महाकाली का रूप धारण कर लेती है। అప్పుడు She takes on the form of Mahakali. तो जगदम्बा जो है वो महाकाली का रूप धारण करके ब्राह्मणों की दुनिया में जो असुर है బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో అసలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క వినాశనం చేస్తారు Jagdamba takes on the form of Mahakali and destroys all the demons in the world of Brahmins. भारत माता और जगत माता, Bharat Mata and Jagat Mata. जगत जननी టైటిల్ ఆమె जगदम्बा, జగదంబ जगत जननी जगदम्बा, జగదని జగదంబ Jagdamba is the mother of the world, that is, Jagat Janani. और भारत माता माना पार्वती कहो అంటే పార్వతి అనుకోండి या लक्ष्मी कहो లక్ష్మి
And Bharat Mata means you may call her Parvati or you may call her Lakshmi. तो जैसे दो देवियां विशेष मुख्य हैं, ఎలా అయితే Just as two Devis, that is, female deities, are especially important, ऐसे ही दो देवताएं मुख्य हैं, राम और कृष्ण। similarly, two male deities are important, Ram and Krishna. కూడా రాముడు కృష్ణుడు संगम युगी वर्तमान समय के नाम है ब्रह्मा और शंकर। Their present names in the confluence age are Brahma and Shankar. రంగంలో ఉన్నారు. ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति सरस्वती, బ్రహ్మ యొక్క సహయోగి శక్తిని సరస్వతి. సరస్వతి. The cooperative Shakti of Brahma is Saraswati, और शंकर की सहयोगी शक्ति శంకరుడి యొక్క पार्वती। సహయోగి శక్తి and the cooperative Shakti of Shankar is Parvati. उनके सतयुग त्रेता के नाम भी है। There are also their names of the golden age, the silver age. नारायण की सहयोगी शक्ति लक्ष्मी, The cooperative Shakti of Narayan is Lakshmi, राम की सहयोगी शक्ति सीता। and the cooperative Shakti of Ram is Sita. वो जन्म लेते 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 कलयुग के अंत में आकर के फिर हमारे రాముడు तुम्हारे జన్మ जीवन में తీసుకొని ఇప్పుడు ఈ విధంగా నారాయణ కూడా ఒకే బంధం. While taking many births, they too become like you and us at the end of the Iron Age. ठीक है। All right.